Class 8 Social Science Chapter 9 The Freedom Movement of 1857 सेम 1 का ये 9th चैप्टर है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने वीडियो पार्ट 1 में प्लानिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड मंगल पांडे तक कंप्लीट किया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है दिल्ली एंड बहादुर शाह सफर। द सोल्जर reached Delhi from the Meerut and in the morning of 11th May and they could capture the Delhi the help of the Indian army present there. They convinced the 80 years old Mughal emperor Bahadur Shah Zafar and he accepted the leadership of the revolt and the news infused a new life in the revolt। और ये लोगों के बीच ये न्यूज़ इन्फ्यूज़ हो गई और उसकी वजह से हमारे रिवोल्ट को एक नई लाइफ मिली। मैनी रीजन्स ऑफ इंडियाज जॉइन द रिवोल्ट और इंडिया के बहुत सारे रीजन इस रिवोल्ट के अंदर जुड़ गए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कानपुर एंड नाना साहेब। नाउ कानपुर एंड नाना साहेब। कानपुर ब्रोक इनटू द रिवोल्ट 4 जून 1857। कानपुर में 4 जून 1857 में रिवोल्ट ब्रोक हो गया एंड नाना साहेब पेशवा वाज आस्क्ड टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट। अब नाना साहेब पेशवा चाहते थे कि इसका लीडरशिप कौन लेगा। हाउएवर दे हैड टू सरेंडर टू ब्रिटिश फॉलोइंग एंड एक्यूट द शॉर्टेज ऑफ द फूड एंड वाटर ड्यू टू द 22 लॉन्ग सेज। और इतने 22 डेज के लॉन्ग पीरियड की थ्रू वो ब्रिटिशर्स के अंडर में वो सरेंडर हो गई, तो वहाँ की जो लीडरशिप रिवोल्ट की कौन लेगा। नेक्स्ट बिहार एंड कुंवरसी। तो बहुत सारे स्टेट थे ये रिवोल्ट के अंदर जुड़ गए। अभी नेक्स्ट है बिहार एंड कानपुर कुंवरसी। तो पटना एंड जगदीशपुर वर द मेन सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ बिहार। कुंवरसी a 70 years old landlord was the leader of this revolt। तो वहाँ बिहार का जो कुंवरसी था वो 70 years old था और वो इस रिवोल्ट का लीडर था and he fought bravely against the Britishers and during a battle and he got a shot in his arm to stop the poison from the spreading in his body। He chopped his hand off from elbows and offered it to river Ganga and he freed जगदीशपुर फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर ही डाइड। और जब उसकी डेथ हुई उसके पहले उसने जगदीशपुर को ब्रिटिश के कंट्रोल से फ्रीडम कराया और उसको जहाँ पे गोली लगी थी उसने अपने हाथ खुद काट कर गंगा में बहा दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट झांसी एंड ग्रेट वॉरियर। यानी ये सारे जो हमारे 1857 के मेन रिवोल्ट के मेन लीडर्स थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी। लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन एज देयर थ्रोन। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उसके खुद का बेटा नहीं था, उसने अपना एडॉप्टेड किया था उसका खुद का सन। आफ्टर 6 मंथ में उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए झांसी की रानी ने एडॉप्टेड सन किया था एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट बाय ब्रिटिशर्स ऑन हर थ्रोन ऑफ झांसी। दिस इज द रीज़न फॉर द जॉइनिंग द रिवोल्ट एंड शी वॉज one of the most skillful leader of the revolt and she had also prepared an army of a woman to fight against the British। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उसने एक वुमन आर्मी बनाई थी जो ब्रिटिशर्स के सामने लड़ सके एंड दे फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स क्वीन लक्ष्मीबाई वॉज one of the greatest woman leader in the revolt of 1857। और 1857 की एक वुमन लीडर ग्रेट वुमन लीडर थी इस रिवोल्ट की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ब्रेव आर्मी कमांडर। तात्या टोपे नाना साहेब पेशवा had made a Tatya Tope the commander of the army Kanpur। Soon he became as a trusted commander and he skillfully fought to free Kanpur, playing the role of the commander for the first time in his life।
For the next 2 years, he played the major role in the revolt across the country, and no one in his triumph, and he has fought as many battle as he did. बहुत सारे वो बैटल नहीं कर पाया रिवोल्ट के अंदर, वो अपना मेजर रोल उसने प्ले किया, बट उसके बाद उसने जो ब्रिटिश के सामने जो वो इस तरह उस मैनी बैटल्स नॉट डिड इन द ब्रिटिश आर्मी. ऑल्सो तात्या टोपे पेशवा एंड कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ कानपुर, वो कानपुर की आर्मी का कमांडर था, एंड he became a trusted commander and skillfully fought free Kanpur, playing in commander and British fight against the Britishers. Soldiers from the different part of the India had joined the revolt. तो इंडिया के काफ़ी पार्ट में सोल्जर भी इसके अंदर ज्वाइन हो गए. नॉर्थ इंडिया, बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ एंड गोरखपुर had joined in this revolt. Also Ajmer, Nasirabad, Abu from the Rajputana and Gwalior, Mandsaur, Indore, Dhar from the central India participate in the revolt. Also Satara, Kolhapur, Savantwadi, Nargad, Dharwad, etc. are become the active in south. However, these center were scattered. तो ये अलग अलग जगह सेंटर होने के बाद भी ये सारे रिवोल्ट में जुड़ गए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात. अब देखते हैं गुजरात में भी ये रिवोल्ट हुए थे. एंड द 7th Battalion of the British Army broke in the revolt in Ahmedabad, Gujarat in 1857. However, it was soon halted. The Dahod, Zalod, Godhra of Panchmahal witnessed the skirmish with the British army. The soldier could capture the government officers with the help of the native, but were soon defeated. The Naikada of the Panchmahal continued to rebellion almost of the for a year. यानी कि जो पंचमहाल का जो नायकड़ास था वो 1 ईयर तक कंटिन्यूस वहाँ पे छोटे छोटे रिवोल्ट होते रहे, रिबेलियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. गरबड़दास पटेल, द हेडमैन ऑफ द आनंद इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, collected almost 2000 volunteers of the Kodi and Naikadas community to join this revolt. He was supported by Jivabai Thakur of Kanpur and Malaji Joshi and Krishna Das Dave. However, the supports of the Garbhad Das were captured by Britishers. और इन सारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने गरबड़दास को सपोर्ट किया, बट गरबड़दास वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड टाइड द कैनन वर blown off with the cannonball fire. Garbhadas was exiled to Andamans were died. यानी कि गरबड़दास को वहाँ यहाँ से देश से निकाल अंडमान जेल के अंदर डाला गया और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई. द पीपल ऑफ चंदब, यानी कि द विलेज चंदब विच इज़ 16 miles away from the Idar, it accepted the leadership of the Nathji and Yamaji and joined the revolt. The British had camped at the Nandan village between the Oka and Baradi. The Britishers' commander of navy becomes the impatient and they reached the fort of Bet, Dwarka, via the Bay of Bet. तो वो वहाँ से अपनी नेवी लेकर द्वारका पहुँचे एंड दोनावन ऑर्डर एंड अटैक ऑन द फोर्ट. द वागर्स inside the fort had
no such artillery to counter attack, and at the time the Wagner women came up with a very activist and women came brave and innovative ideas. They showed the mattresses with the water in which they could catch the cannon balls and cool them immediately. These would enable the Wagner men to fight the battle without being hit by the cannon balls. However, in the history of the world, such act valor has been exhibited. Valor women very bravely dismayed the cannonballs without worrying about their own lives. खुद की चिंता उन्होंने नहीं की. Also, they joined in this revolt. Their act of the bravery was equivalent to the रानी लक्ष्मीबाई, यानी रानी लक्ष्मीबाई की तरह उन्होंने अपना एक्ट दिखाया. So these women were the Lakshmibai of Gujarat. Cities of North Gujarat like Patan, Kheralu, Biloda, Mudethi, etc. broke into the revolt with the help of the native. And apart from these, in the December 1858, Tatya Tope stayed with his army in the Panchmahal district of Gujarat. He had to escape to the forest of the Vansada when being chased by the British army. और वहाँ तक ब्रिटिश आर्मी उसका पीछा करते वहाँ तक पहुँची थी. नाउ एंड ऑफ द रिवोल्ट. अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंड ऑफ रिवोल्ट. देखते हैं एंड ऑफ रिवोल्ट में क्या हुआ. ड्यूरिंग द रिवोल्ट वेपन एंड सोल्जर्स वर सप्लाइड टू द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंग्लैंड. और जो ब्रिटिशर्स को यूरोप से यहाँ पे इंग्लैंड से यहाँ पे सारे जो वेपन सप्लाई किए जाते थे और ईरान से एट्सेट्रा. द रिवोल्ट हैड स्टार्टेड ऑन 10th May 1857, बट बाय द एंड ऑफ द June 1857 द ब्रिटिश वर एबल टू regain the control on Banaras and Allahabad. Kanpur was captured by the end of the July. Also, Delhi in September 1857, Bahadur Shah Zafar and his queen Begum Zinat Mahal were imprisoned and exiled to Rangoon. उसको भी जेल के अंदर डाल दिया. And the capital of Burma where they died after the few years. और बर्मा जो उसकी कैपिटल है रंगून की, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई. Their 3 sons were murdered. और उनके 3 बेटे थे बहादुर शाह जफर के, उसकी भी डेथ हो गई, मर्डर हो गया उनका. नाउ लखनऊ वॉज कैप्चर्ड इन मार्च 1858. झांसी फेल बिकॉज ऑफ द treachery of one of the countries of Jhansi as a result of Lakshmibai escape towards the Kalpi, where she died while fighting a battle with the British troops. तो ब्रिटिश की ट्रूप के सामने फाइटिंग करते टाइम रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई. नाउ also Nana Sahib Peshwa escaped to Nepal after the final defeat, and it believed that lived in the Sihor village of Bhavnagar district of Gujarat, where he is believed to have died in 1902. ऐसा माना जाता है कि 1902 में उनकी डेथ हुई. It said that Tatya Tope was captured due to the betrayal of one of his allies. According to the official documents, Tatya Tope was hanged on 18th April 1859. However, as per the other source, we come to know that Tatya Tope had managed and to escape. Someone else was hanged in his place. So it is believed that he had spent a last year of life in नवसारी. ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना लाइफ का लास्ट जो ईयर था वो उन्होंने नवसारी में स्पेंड किया था. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वाई वॉज रिवोल्ट फेलियर. तो हम जो ये अलग अलग रिवोल्ट क्यों फेल हुआ. बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, बहुत इस रिवोल्ट में
फिर भी ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, तो उसके काफ़ी रीज़न थे। लेट्स सी, द रिबेल लैक कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक उनका जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था रिबेल का, वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। सो देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एंड there was no provision of the reinforcement of man, money and immunization. Second, the outbreak of the revolt happened way before and the pre-planned date, यानी कि जब फिक्स हुआ था उसके पहले डेट पे रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। एज अ रिजल्ट द प्लानिंग वॉज डिस्टर्बेड। थर्ड पॉइंट है द रिवोल्ट ऑफ remained the concentration largely in the North India. Many social reforms and refrained directly or indirectly from join the revolts. And these prove the intellectual class did not support the revolt, और उसकी वजह से रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं मिला। और फोर्थ पॉइंट, इंडिया इज़ अ कंट्री नॉन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग एट्सेट्रा। तो यानी कि यहाँ इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग जाति के लोग, यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है, अलग अलग फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग, ये सारे भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल वर रूल्ड बाय द रीजनल डायनेस्टीज। As a result, the sentiment nationalism belonging to India as a one nation had not developed either, and the people of the leadership, यानी अच्छे लीडरशिप ना हो तो उसकी वजह से इंडिया वन एक नेशन नहीं फॉर्म होता। सो मैनी लीडर्स आर ज्वाइन इन दिस रिवोल्ट। Also, Sikh and Gurkhas fought by the side of the British, which proved to be major disadvantage for rebels. तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है कि जिसकी वजह से उन लोगों ने ब्रिटिशर्स की फेवर में फाइट किया। ऑल्सो द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर आर्मी, वेपन्स एंड द मिलिट्री कमांडर कंपेयर्ड टू द रेबल्स। All the leaders were fighting for the regaining their powers or territories lost to the Britishers, and they were not fighting for the freedom of their nation. वो लोग ऐसा नहीं मानते थे कि वो हमारे खुद के कंट्री के लिए फाइट कर रहे थे। तो ये लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग का। नाउ लास्ट पॉइंट है इफेक्ट एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट। The revolt was not successful against the Britishers. However, it's still in a new era of changes. But some changes after these eras. यानी उस टाइम के ड्यूरेशन के बाद थोड़े चेंजेस आए, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट सम चेंजेस आफ्टर द रिवोल्ट्स। कंपनी रूल केम टू एंड इन इंडिया एंड इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ क्राउन। तो यानी कंपनी रूल यहाँ पे ख़त्म हो गए और यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट हो गए। एंड द इंटरफियरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वॉज स्टॉप। यहाँ उनकी इंटरफियरेंस का ख़त्म हो गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स इंडिया। तो यहाँ पे उनकी जो अलग अलग पॉलिसियाँ वो अप्लाई करते थे वो यहाँ पे स्टॉप हो गई। The salary allowances and facility given to Indian soldiers sepoys were increased, यानी कि यहाँ पे जो कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर के कंपेयर में उनको जो सैलरीज दी जाते थे वो इंक्रीज हो गए हैं, और जो प्रमोशन नहीं मिलते थे वो प्रमोशन मिलने लगे। लास्ट पॉइंट, द रिवोल्ट हेल्प इन द इनोवोकिंग द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहाँ अब अलग अलग जो रिवोल्ट हुए और उसकी हेल्प की वजह से जो यहाँ पे इंडिया में एक नेशनलिज्म फॉर्म हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टोरी। बाय फ्रेंड्स।